guys, welcome back to my channel and hope you guys enjoyed my last two videos in which I showed about life of Melbourne. तो जैसे कि मैंने आपको lifestyle of Melbourne के बारे में बताया कि what are the adventures things जो मैं करता रहता हूँ Melbourne के अंदर, and in last videos I show the skydiving video which was on top of my list, so I decided to do it and then it was really adventurous fun. तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आपको कैसे जो है कैसे जो लाइफस्टाइल है आपको मेलबर्न के बारे में दिखाऊंगा कि लाइफस्टाइल और दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मैं किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं और करता रहता हूँ मेलबर्न में, तो उनके बारे में कवर अप करूँगा. बट द थिंग इज, जैसा कि आज मेरा डे ऑफ है तो मैंने कोशिश की थी कि अपने फ्रेंड को कॉल करूँ और उनसे पूछूं कि अगर वो अवेलेबल हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी अवेलेबल नहीं है. तो हुआ ये कि मैंने, बिकॉज यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि सब लोग अवेलेबल नहीं होते हैं. कुछ लोग जो है वो वीक डेज पे काम कर रहे हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो वीकेंड्स पे काम कर रहे हैं, तो इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू कैच एवरीवन. बट वन ऑफ माय फ्रेंड जो है उसने मुझे सजेस्ट किया था कि जो केप स्ट्रैंक है इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू गो इन मेलबर्न. तो वी कैन आस्क गूगल हाउ फार इज इट. सो लेट्स ट्राई गूगल एंड देन आस्क हिम हाउ फार इज इट. Hey Google, can you tell me how far Cape Schanck is from Chadstone? Chadstone is 85.9 kilometers away from Cape Schanck by car. Okay, so it's about 85 kilometers away from Chadstone from my place. So approximately it will be taking around 1 hour 15 minutes. So आई थिंक यही कोई सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट प्लेस है जहाँ मैं जा सकता हूँ और मैं जाकर अपने आप जस्ट लाइक एक्सप्लोर कर सकता हूँ कि मेलबर्न की ब्यूटी एंड स्टफ. तो आई विल डेफिनेटली ट्राई माय बेस्ट कि ऑन द वे बैक वंस आई एम कमिंग बैक तो मैं आप लोगों को शो कर सकूँ, लाइक दिखा सकूँ कि जो नाइट लाइफ है जो मेलबर्न के बारे में, एंड ट्राई टू give you more idea how the nightlife is and how the life is over here, because everyone try to comment and say they try to show the negativity, like you over here the lifestyle is really hard and stuff. But the thing is, like in the beginning जब आप आते हो किसी भी मुल्क किसी भी दूसरे मुल्क जाते हो तो प्रॉब्लम ये होती है कि आप जो है आपको शुरू में तो स्ट्रगल करना पड़ता है, but then you get like used to of it, and then you start try to start within the system, you goes in the system, and then you try to learn the things, and then you get your lifestyle better and better day by day. So it's hard once you come up over here, but once you get used to of all those things and once you get a better job and after struggling a bit of time, then you will definitely get the rewards and results. In your way, 'cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. 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 Yeah, I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna dance all night, forget my problems, I might go insane. I don't really give a damn what they say. And now you know it. Hey, little lady said you feel the same, but I don't believe a word you say, 'cause I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be
Alright guys, just came back from city, so it was a really hectic day. Hope you guys enjoyed my video, and please do subscribe and like my channel, and peace out. Pakistan Zindabad.